part hai. Okay, so let's see the stages of crime. Commission of crime consists of different stages. So kitne stages mein divided hai? Basically divided into 4. First one, can you read this? First point. शुरुआत ही कहाँ से होती है? Ma'am, it should be done to a human being. Should be done by a human being. Sir. वो तो क्राइम की essentials है, ठीक है? Basically crime कहने के लिए it must be an act done by human being, etc. Right now we are talking about the stages of crime. हमें पता है कि ये crime है. अब crime करने के stages क्या है? Stage 1, 2, 3, 4. So it starts with criminal intention. So intention is a combination of the earlier 2 points that we have seen, mens rea plus actus rea. अब मेंस रिया को हमने कल इन डेप्थ देखा था, राइट? मेंस रिया के 3 फॉर्म्स है. कौन से फॉर्म्स है उसके? मेंस रिया के 3 फॉर्म्स. मैम INR करेक्ट. इंटेंशन, नेग्लिजेंस के लिए डॉक्टर का एग्जांपल, recklessness के लिए ड्रिंक एंड ड्राइव का एग्जांपल. करेक्ट. Okay, so intention is going to be a combination of these 2 things. So this is the first stage in the commission of offense, and it is basically a mental stage. That is, आप क्या सोचते हो, आपकी सोच क्या है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे important है. And not followed by any act cannot constitute an offense. Okay, बहुत ऐसे लग रहा है कि ये person ना इसके साथ इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए. अभी recent जो बाणेर की केस हुई थी of kidnapping, it is said, okay, the things are under investigation, and it is said that the person is a very famous builder in Baner area, and therefore, you know, काफी सारे उनके schemes चल रहे हैं, उन्होंने काफी सारे लोगों से उनके lands को ले लिया है. So maybe a particular transaction might have occurred wherein he has hurted someone. उसने किसी को फंसाया है, कम पैसे देके वो जमीन उसने ले ली है, and this kidnapping was a reaction of those acts. Okay, so इंटेंशन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों के दिमाग में एक पर्सन बैठ जाता है कि नहीं, इसने मेरे साथ गलत किया है तो मैं इसके साथ कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, चाहती हूँ. लेकिन ये सिर्फ सोच से कुछ नहीं होता. ओके, सो मेंटल स्टेज, इंटेंशन टू कमिट, if it is not followed by that act, it cannot constitute an offense. So what is important for us कि intention के साथ साथ वो actual में act commit भी होना चाहिए, तो ही हम उसको crime कह सकते हैं. नहीं तो वो सिर्फ एक intention से, सिर्फ intention से क्या होता है? कुछ नहीं होता. Okay, so the first stage of crime says you have an intention and you act. You had an intention of kidnapping his son and you acted on that. Then it is an offense. Okay. Example: if a man drives in a rash and reckless manner, resulting in an accident causing death of a person, the reckless driver cannot plead for innocence by stating that he never intended to cause the death. क्योंकि यहाँ पे recklessness cover हो जाता है. It is one of the forms of mens rea, right? Remember the forms of mens rea, INR. So वो उसमें cover हो जाता. He cannot plead innocence कि नहीं, I was innocent, मेरा intention नहीं था. आपका intention था, नहीं था. आपके उस reckless behavior की वजह से अब वो चीज हो चुकी है, and उसके लिए you will be held liable. So we apply the principle of strict liability over here. A reckless driver should know that reckless driving is likely to result in harm and can even cause death of the persons on the road. Further, recklessness is a type of mens rea. Therefore, a reckless driver who causes death of a person can be presumed or deemed to have intended to cause the death of the person. उसको ये already पता है कि recklessness driving मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा risk associated है. उसने उस risk को देखा है, लेकिन he did not think of understanding the consequences of that risk. It may result in death. What may happen if the person dies? Maybe he is the whole and soul of a particular family, or उसकी death हो जाती, or
a particular person who is a mother to a child. So उतनी समझदारी है ही नहीं उस person, and therefore we are saying he is a reckless driver. तो उसका intention था नहीं था, हम उसको punish करेंगे. Okay, so intention is the first stage, and intention over here will include both mens rea and actus rea. Okay, generally क्या गलतफहमी होती है यहाँ पे, intention मतलब कि you only include mens rea, but सिर्फ mens rea से कुछ नहीं होगा. First stage में mens rea के साथ actus rea should also come. Okay, so intention must be followed by the act. Somewhere the commission of the act must also take place. सेकेंड स्टेज में क्या, सेकेंड स्टेज में देखो आपको कुछ भी करना है, आपको अभी मैं कहती कि आफ्टर द लेक्चर हैव अ नाइस कप ऑफ टी और अ कॉफी, व्हाटएवर यू लाइक. तो आप रेडीमेड, आपको चाय या कॉफी नहीं मिलने वाली, आपको बनाना है, या राइट, और समवन एल्स विल मेक फॉर यू. लेकिन देयर इज लॉट ऑफ प्रिपरेशन बिहाइंड इट. सो व्हेन वी डू एनीथिंग, चाहे वो किचन का कोई डिश हो या कोई ऑफेंस हो, anything, it definitely requires preparation. It requires planning. Yes, so preparation का मतलब क्या होता है? To make arrangement of the necessary measures for commission of the intended crime. जब ऐसे कहते हैं ना कि criminals जो होते हैं ना, वो भी, उनके पास भी दिमाग बहुत होता है, इनफैक्ट कुछ ज्यादा दिमाग होता है, more than normal people. सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि वो उसको सही डायरेक्शन में यूज नहीं कर रहे. They are using it for a different purpose. They are using it with a different objective in mind. So when wars are planned, when sudden attacks are planned, when an attack like 26/11 was planned, it required lot of preparation, lot of preparation. आप लोगों ने वो मूवी देखी है 26/11 की? Have you seen the movie? You know how many years they were planning for this? Yes. Yes, so काफी सालों से उनका प्लानिंग चल रहा था. They had visited ताज, उनके पास ताज के फोटोज थे. They knew in and out everything about ताज होटल, कि कहाँ से एंटर करना है, कहाँ से एग्जिट करना है, टोटल कितने एंट्रीज है, अंदर रूम्स तक कैसे पहुंचना है, everything they knew. That is what is preparation. ओके, तो वो जब आके इन सब चीजों का अच्छे से स्टडी करके वापस गए. ओके, सो दैट वाज द प्रिपरेशन स्टेज. So preparation in itself is not punishable. Okay, preparation in itself is not punishable. You prepare and you go, but you are never able to actually commit that offense. तो आपको punishment नहीं होगी. आपने सिर्फ prepare किया था, लेकिन आपने किया नहीं offense. Okay, example over here, Bhanu purchases a pistol and keeps the same in his pocket, duly loaded, in order to kill his enemy. Okay, बहुत एकदम जोश में आके पिस्तौल लेके लोड वोड करके पॉकेट में रखिए, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं करता है, तो इसको ऑफेंस नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिर्फ प्रिपरेशन है. ओनली प्रिपरेशन will not amount to any crime and it is not punishable. Bhanu has not committed any offense, as still he is at the stage of preparation, and it will be impossible for the prosecution to prove that he was carrying the loaded pistol only for the purpose of killing Shanu. So understand the point. क्यों उसको हम try नहीं कर सकते preparation के लिए? क्योंकि आप कोर्ट में जाके prove क्या करोगे? कैसे prove करोगे कि ये सब जो उसने preparation किया था, ये शानू को मारने के लिए उसने किया था? The gun was loaded. How will you prove these things? It will be very difficult. Therefore, preparation in itself is not punishable. In certain exceptional cases, mere preparation is also punishable under IPC, like when you are preparing to wage a war against government of India. यहाँ पे you don't have to wait कि जब वो इंडिया पे हमला करेंगे तो हम उनके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे. नहीं, हमें अपने यहाँ वहां से कोई फॉरेन सोर्सेज से पता चलता है that certain territories are coming together, certain organizations are coming together and planning a conspiracy against India. That is sufficient. वो लोग preparation कर रहे हैं. At that moment itself, you can try to have a hold on them, try to arrest them, because they are preparing for waging a war.
Preparation for counterfeiting, that is making fake coins or government stamps and currencies. Okay, which is another very big offense. यहाँ पे वो बना रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, preparation कर रहे हैं, that itself will amount to offense. So ये second exception है. Third exception is possessing counterfeit coins, false weights or measurements and forged documents. So आप बना नहीं रहे हो, लेकिन आपने आपके possession में रखा है and आपके थ्रू वो मार्केट में सर्कुलेट होने वाले हैं. False weights, false measurements or counterfeit coins and currencies. Making preparation to commit dacoity. Okay, we had come across this word. Dacoity is what? It is robbery at highways. Highways में लूटमार करना, उसके लिए भी planning required है, अचानक से नहीं होता है, right? So these four things, though they are only in the preparation stage, they are actually not committed, still they are punishable. So very important, remember the four exceptions. Self-preparation will also amount to offense. But otherwise, general rule कहता है कि preparation in itself is not punishable. Yes, second stage is clear, everyone. Preparation stage. Yes. Any guesses what will be the third stage? First was intention, second was preparation. अब third में क्या होगा? वो actually करेंगे मैम. Actual में करना, that is attempt, correct? Attempt करना. So attempt is the third stage in the commission of crime and attempt is punishable. आप successful हुए नहीं हुए, आपने कोशिश की है चोरी करने की, आपने कोशिश की किडनैप करने की, लेकिन कर नहीं पाए, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया था, therefore attempt is punishable. Okay, successful attempt becomes an actual commission of crime. Okay, अगर successfully किया तो फिर उसको attempt कहेंगे नहीं, फिर उसको हम crime ही कहेंगे. लेकिन अगर आपका attempt successful नहीं था, that attempt itself is also punishable. Okay, so actual commission हो या सिर्फ attempt हो, दोनों भी क्या है? Punishable है. Both the things you will be held guilty. In the first case, he is guilty of commission of crime, and in the later case, he is guilty of attempt only. Though IPC does not give any definition of the word attempt, it simply means direct movement towards the commission of a crime after necessary preparation has been made. So necessary preparation होने के बाद, when you move towards the commission of the crime, it is called as attempt. So इस तरह से attempt वाली stage जो है, it comes in between preparation and commission. Preparation हो जाता है और commission होने के पहले जो होता है उसको कहते हैं attempt. See over here, a nice example is given. If a man buys a box of matchstick, he cannot be convicted of attempted arson, irrespective of how clearly it is evident that he intended to set fire to a haystack. Even if he approaches the haystack with the matchsticks in his pocket, he cannot be convicted for attempting arson. But as soon as he bends down near the stalk and he lights a match, which he extinguished when he sensed that someone is watching him, he will be held guilty of attempting to burn it. तो यहाँ पे उसका intention भी है, उसने preparation भी किया और उसने कोशिश भी की है, लेकिन जैसे ही वो आवाज सुनता है कि पीछे से कोई आ रहा है, he extinguished his matchstick. इसके लिए he will be held responsible क्योंकि उसने attempt किया था, लेकिन उसका attempt successful नहीं हुआ. अगर उसका attempt successful होता तो पूरा आग लग जाती थी, and then we would call it as commission of crime. We would call it as commission of crime. But यहाँ पे उसका जो attempt था वो unsuccessful है, लेकिन उस unsuccessful attempt के लिए भी उसको punishment हो सकती है. Ma'am, what's arson? Yes. What's arson? Attempted arson. Okay. He will be attempted arson basically means he wanted to
put fire, okay, just imagine a big farm, okay, and farm को एक अगर आग बस लगा दी, जैसे bush fires होते हैं ना, bush fire. No, no. I'm asking the meaning of the word arson, not in this example. Okay. Arson. If a man buys a box of matchstick, he cannot be convicted of attempted arson. It is a criminal act, okay? Arson, if you see, it is a criminal act of deliberately setting fire to the property. Just आपके pocket में है, कुछ लोगों को आदत होती है lighters carry करने की. If you have matchsticks in your pocket, just carrying it से कुछ नहीं होगा, right? You cannot be punished that yes, you are having some plans, okay? So arson का मतलब आप लिख के ले सकते हो, everyone you want, you can write. It is a criminal act of deliberately setting fire to the property. It is a criminal act. So just having a box of matchstick in a pocket, for that you cannot be charged with this criminal act. Sahil ने पूछा था ना question. Yes, ma'am. So rest of you also, if you want to write, you can. What is it? The criminal act of deliberately setting fire to a property. Setting fire to a property. Yes. Can we go ahead? Yes, ma'am. Last stage of crime, and that is commission, or also called as accomplishment. So the last stage in the commission of crime is accomplishment. If the act succeeds in his attempt, the result is commission of crime and he will be guilty of offence. If his attempt is unsuccessful, he will be guilty for an attempt only. So आप offence करते हो, that is you attempt. अटेम्प्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करो कि आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल है या तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं है. अगर आपका अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल है तो भी you will be charged for that offense because you attempted it. And if you are successful in your attempt, then you will be charged for the commission of crime. Okay, क्योंकि आपने वो क्राइम अभी कर लिया, आपने सिर्फ कोशिश नहीं की, आपने उस अटेम्प्ट को एक्चुअल में किया है, and therefore you will be punished. Okay. So, few of you, this question may arise, whether the punishment for actual commission of crime is same with respect to attempt. इन दोनों को अगर हम लोग compare करते हैं, whether the punishment is same, what do you think will be the answer? You attempt to copy in the exams. You attempt to copy in the exams, and you actually copy. दोनों के लिए सेम पनिशमेंट रहेगी या अलग पनिशमेंट रहेगी? अलग रहेगा. कृष्णा सिंह, अगर दोनों को अलग रहेगी? यस मैम सेम ही देंगे ना ऑलमोस्ट. सेम रहेगी ऑलमोस्ट. तो फाइनल आंसर क्या है? ऑलमोस्ट वर्ड की वजह से इट इज बिकमिंग वेरी वेग. ये साहिल, Sahil is there. What happened? Are you able to hear me? Sahil is not there. Yes, ma'am. Okay, Sahil is not there. Mansi, what is your opinion? डिफरेंट रहेगा. डिफरेंट होगा. Okay.
वेल अब यहाँ पे क्या किया है इंडियन पिनल कोड ने, आपको वो सेक्शन आपके सिलेबस में अभी नहीं है, but there's a section 511 511 of IPC which says that, okay, it says that, I will take you, I think, so instead of I reading it out, I will just show you that particular section 511, yeah, section 511 of IPC. Okay, and then I'll share the screen. Let me know if you're able to see. Indian Kanun 511 of Indian Penal Code. Yes, ma'am. Yes. See over here. A makes an attempt, कोशिश करता है to steal some jewels by breaking open a box and finds after so opening the box that there is no jewelry in it. बेचारा क्या करता है, चोरी करने की कोशिश, लेकिन उस ज्वेलरी बॉक्स में उसको कुछ नहीं मिलता है. He doesn't act towards the commission of theft and therefore is guilty. तो हमारा जो पॉइंट है कि आप ऑफेंस करने की कोशिश भी करते हो तो आप पनिशेबल हो, यू विल बी हेल्ड गिल्टी. व्हाट विल बी द पनिशमेंट? सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट दैट. Punishment for attempting to commit offenses which are punishable with imprisonment for life or other imprisonment. Whoever attempts, listen carefully, okay? Whoever attempts to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment, or to cause such an offense to be committed, and in such attempt does any act towards the commission of the offense shall, where no express provision is made by this code for the punishment of such attempt, he will be punished with imprisonment of any description provided for the offense for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment for life, or as the case may be 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense. इसका मतलब क्या होता है, अगर चोरी के केस में उसको 4 साल की पनिशमेंट हो सकती है, यहाँ पे उसने एक्चुअल में चोरी नहीं की लेकिन उसने अटेम्प्ट टू थेफ्ट किया है, so the punishment will be 1/2 of 4 years. Are you getting? It would be 1/2 of 4 years. So 511 is a residuary section and it says अगर आईपीसी ने कोई भी ऑफेंस के लिए अगर अटेम्प्ट के लिए कहीं पे भी पनिशमेंट नहीं दी है कि चोरी ये ऑफेंस है, मर्डर ये एक ऑफेंस है, बट अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू थेफ्ट अगर आपको कहीं पे भी उसकी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिखती है तो आपको ये जनरल रूल अप्लाई करना है, which is 1/2 of the longest term of imprisonment provided. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, and the statement which we have in our book is repeated multiple times in IPC. An attempt is made punishable because every attempt, although it falls short of success, it must create an alarm which by itself is an injury, and the moral guilt of the offender is the same as if he had succeeded. Okay, so the moral guilt must be united to injury in order to justify the punishment. चलो वापस आ जाते हैं अपने चार्ट पे, our notes. So 4 stages, we are done with the 4 stages. The next part is punishment. इतना part करके we will stop for the day. Okay, punishments के types क्या है? Under IPC you have punishments like death, life imprisonment, forfeiture of property and fines. Okay, civil में you come across these terms: damages, compensation, ये सब civil remedies है. You will not come across these words under CRPC. So death क्या है? What do you mean by death sentence? Death मतलब hanging to death, right? What happened with कसाब was a death sentence. अब मैं कसाब का एग्जाम्पल तो बहुत बार दे रही हूँ आपको क्योंकि it was something relatively recent and something which you all know. ऐसी दूसरी कोई केस आपको याद आ रही है जहां पे डेथ सेंटेंस दिया था?
And tell me, what is the probability of giving a death sentence? Is it given every time? Is a death sentence given by the court every time in every criminal offense? Ma'am, observe Guru. Yes. Conducted for attacking the Parliament of India. Correct. Basically waging the war against government. So convicted Correct. for Parliamentary attack में हुआ था. Yes. So if you basically just sit back and you go through those case laws कि कौन से cases में criminals को death punishment दी थी, you will reach at a conclusion कि जो बहुत serious offenses होते हैं, बहुत ज़्यादा serious, वहां पे ही death sentence दिया जाता है. Okay, वहां पे ही death sentence दिया जाता है. So death sentence is the hardest, or I can say it is the toughest punishment which is provided in the IPC, which involves judicial killing or taking the life of the accused as a form of punishment. So definitely India recognizes that everyone has a right to life, and ऐसे ही किसी का life लेना, judicially killing him is definitely not a good thing. बट इन एक्सट्रीम सिचुएशन जब उस पर्सन ने ऑफेंस ही उस तरह का किया है, तब आपको बिल्कुल आगे पीछे नहीं देखना है. जुडिशियल किलिंग विल ओनली बी द राइट ऑप्शन इन दैट सिचुएशन. सो द प्रिंसिपल यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन गिविंग डेथ सेंटेंसेस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस. उज्जवल निकम जी जब चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे बात करते हैं, he very frequently uses this term that रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही कोर्ट कैपिटल पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस देने वाली है, क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू कैन नॉट से दैट इस पर्सन ने ऑफेंस किया तो अब इसको फांसी दे दो. यू विल डेफिनेटली हैव टू चेक फॉर द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस. अगर वो बहुत क्रूअल ऑफेंस है, बहुत सीरियस ऑफेंस है, तो हम उसकी जुडिशियली लाइफ ले सकते हैं, बिकॉज लाइफ इज ओनली वंस. You only get one life. So we generally feel कि अगर किसी के साथ चोरी का ऑफेंस है, किसी ने थेफ्ट किया, हाउस ब्रेकिंग, तो गिव हिम एन इम्प्रिजनमेंट. एक 5 साल, 10 साल, 14 साल इम्प्रिजनमेंट दे दो, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट ही गेट्स अ टाइम टू कम आउट एंड लीव a good life after that. The life would be very difficult after coming out from jail, but at least he's getting a chance to rehabilitate and live a better life now. हर एक पनिशमेंट के लिए, हर एक ऑफेंस के लिए अगर हम लोग कहते हैं कि पनिशमेंट शुड बी डेथ, दैट इज नॉट द रेमेडी, राइट? उससे ऑफेंसेस कम नहीं होने वाले. So only in very serious offenses, rarest of rare cases, we will give death या capital punishment as the punishment. So कौन से offenses है? मर्डर, वेरी सीरियस. डेकोइटी विथ मर्डर, वेरी सीरियस ऑफेंस. वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो बहुत ही बड़ा ऑफेंस है कि आप इतना प्लानिंग कर सकते हो इंडिया के अगेंस्ट. तो इंडिया के फ्रीडम के बारे में अगर कोई भी कुछ भी करता है, तो बस we will not tolerate it at all. Okay. Abating mutiny actually committed. What do you mean by mutiny? Yes. Mutiny का मतलब क्या होता है? Very simple. You must have come across this word. मैम वो ओपन मतलब धरने पे बैठना अगेंस्ट द प्रॉपर अथॉरिटीज. ओके, करेक्ट. तो करेक्ट. सो आपके जो अथॉरिटीज है, मे बी यू आर एन आर्मी एंड आपका जो भी आर्मी ऑफिसर है, हेड है, वो आपको जो कहता है करने के लिए, आपको नहीं करते, मतलब यू ऑल go against him. Okay, you refuse to obey the orders given by your own boss, by your own authority. That is abating mutiny, which is again a big offense. Giving or fabricating false evidences upon which an innocent person suffers है. मतलब कोई innocent person है, उसको आप फांसी की सजा देने के लिए false evidences देते हो. मतलब आप खुद एक बहुत बड़ा ऑफेंस कर रहे हो, क्योंकि आपकी वजह से किसी और पर्सन को डेथ एज अ पनिशमेंट मिली है. Therefore, you are giving a wrong evidence. Even you should be given a death punishment. Abatement of a suicide by a minor or an insane person. Committing suicide is an offense in India. Okay, committing suicide is an offense in India. What is meant by the word abatement of a suicide?
अबेटमेंट मतलब अलग होता है, अटेम्प्ट अलग होता है. प्लीज रीड इट केयरफुली. आई एम नॉट सेइंग अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड. आई एम सेइंग अबेटमेंट मतलब फॉर एग्जांपल मेरी वजह से वो हो रहा है. करेक्ट. अबेट करना मतलब वो जो पर्सन प्रोवोक करना. ओके, अब लेट्स कंसिडर कल परसों ही सी फाउंडेशन के रिजल्ट्स लगे. ओके, सो यू नो कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं. कुछ बच्चों को बचपन से आदत है कि हमेशा जीतने की आदत है. I have always won. And then when you come across such stages in your life, and for the first time in your life, you see that you have failed in your foundation exams. When you're talking to a friend or maybe a relative, instead of counseling you, he says कि नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो मतलब आप मुंह दिखाने की लायक नहीं रहे. If I was in your place, I would have just ended up my life. I cannot take this. So क्या कर रहे हो आप उस माइनर को, उस insane person को, instead of counseling him, you are provoking him to commit suicide, which is again a big offense क्योंकि आप किसी की life छीन रहे हो by doing that. So abatement of a suicide by a minor or insane person is also a big offense which will attract death punishment. Attempted murder by a life convict. कोशिश की उसने मर्डर करने की, उसको जेल में ऑलरेडी भेजा है. यूर अ लाइफ कन्विक्ट. दैट इज पूरी जिंदगी आपको जेल में ही काटनी है, अंदर ही बैठना है. और आप अंदर बैठ के क्या कर रहे हो? किसी का मर्डर करने का प्लानिंग कर रहे हो, किसी का मर्डर करने की कोशिश की. दैट इज अटेम्प्टेड मर्डर बाय अ लाइफ कन्विक्ट. तो उससे अच्छा है कि इस पर्सन को आप क्या कर दो, कन्वर्ट हिज लाइफ कन्विक्ट इनटू अ कैपिटल पनिशमेंट. Okay, so ये सारी चीजें हैं, and we say the court has to judicially decide whether death penalty will be appropriate considering the gravity of the matter. मतलब seriousness आपको देखना पड़ेगा हर situation में. वो matter, वो crime कितना cruel है, कितना heinous है, and then accordingly you decide whether capital punishment is really worth in that case. Okay. Court is required to give special reasons as to why the court came to this conclusion. Definitely उनको reasons mention करने हैं. They cannot give just because they want to give. No, you need to have proper logical reasons for every offender जिसको आप death punishment दे रहे हो. Okay. Coming to the next one, that is life imprisonment. That is आपको पूरी जिंदगी जेल में काटनी है till your last breath. So till your last breath, you would be inside the jail. Next is imprisonment को दो parts में divide किया. एक है rigorous and दूसरी है simple. Rigorous मतलब कि यहाँ पे आपको physical efforts लेने पड़ते हैं. आप movies में देखते हो, बस उनको जेल में रख के क्या करना है, तो जेल में रख के उनसे कुछ physical hardcore labor काम करवा के लेते हैं. Okay. So government will tell them कि कुछ hardcore labor would be like they have to construct a particular wall. They will train them. They will tell them कि कैसे करना है, ये ऐसे करना है, यहाँ से उठाओ, वहां से उठाओ, इन चीजों को वहां पे रखो. So ऐसा सब कुछ काम करवा के लेंगे. Okay, that is hard labor. Simple is imprisonment is बस आपको 2 साल imprisonment है, आपको जेल में रहना है, बाकी कुछ नहीं करना है. Rigorous में आप जेल के अंदर हो और आपसे फिजिकली कुछ एफर्ट्स भी करवा के लेते हैं. Next type of punishment is forfeiture of property. That is, your property is confiscated without compensation in consequence of some default or act forbidden by law. So basically आपने कुछ offense किया है, हमने proclaimed offender ये एक term हमने देखा था पहले. So you know what happens that you are trying to abscond. आपको पता है आपको सब government, police, authorities ढूंढ रहे हैं and you are just running away from here and there. Okay, just read this part. Fine, this is the last part we did. Ma'am. Yes. Ma'am, I don't know if it's to correct or no, but I have read somewhere that
once if you're if you're being convicted for life imprisonment, then after 5 to 7 years, no, you can make an appeal to the president to lower the sentence. How true is that? वो तो generally भी होता है, see, जब not necessarily after 4 to 5 years. That power is definitely there with the president, right? You know, I know that. Death punishment भी I जब know दी that. जाती है, तो हाँ, डेथ पनिशमेंट के बाद भी आप एक फाइनल आपका ट्राई तो कर सकते हो बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू प्रेसिडेंट. ओके मैम, तो फिर डेथ पनिशमेंट की केस में फिर प्रेसिडेंट का अगर वी गेट द प्रेसिडेंट स्पीच, तो व्हाट डज इट कम डाउन टू? Death will be reduced to life imprisonment. Depends. Okay. Death may be reduced to life imprisonment, or it will be reduced to 14 years of imprisonment. Okay. Yes. Got it. So forfeiture of property, आपकी प्रॉपर्टी ली जाती है. मैंने आपको लॉजिक बताया था कि क्या है कि जनरली यू नो इफ द पर्सन इज absconding, वो कंटिन्यूअसली भाग ही रहा है, ही इज नॉट रेडी टू सरेंडर, तो एटलीस्ट उसकी जो प्रॉपर्टी है मूवेबल इमूवेबल उसको आप कॉन्फिस्केट कर लो. दैट इज एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ऐसा पर्सन खुद आके सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अभी उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ना पैसे है, कुछ है. So there are chances that after forfeiting his property, at least he will surrender. So with that intention, this punishment is there. And the last one, that is fine. Fine is a penalty. It should be imposed individually and not collectively. So when court gives a punishment, which includes a fine, it can specify that in the event the convict does not pay the fine, he would have to go imprisonment for a further period. इससे कुछ याद आ रहा है? Let's see how well you have understood. ये लास्ट के 2 लाइन से आपको कुछ याद आ रहा है? Yes, ma'am. Tell me the provision. मैम, अगर वो फाइन प्रोविजन याद नहीं है मुझे, बट इट सेज दैट अगर वो फाइन नहीं पे कर पाता है, तो जो फाइन का मतलब जो टोटल जो फाइन का अमाउंट है उसका 1/4 उसका डेथ सेंटेंस, उसका डेथ सेंटेंस नहीं, slightly you are going wrong. No. If you are not able to pay the fine, तो आपको जो टोटल इम्प्रिजनमेंट थी उसका 1/4 टोटल इम्प्रिजनमेंट, सॉरी, का 1/4 आपको इन एडिशन हो जाएगा. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन अंडर सीआरपीसी. हाँ. Correct. So like this you should be able to link things, okay, from one act to another act. Fine. So we will stop here. कल हम लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से स्टार्ट करेंगे. Tomorrow same time 1:15 1:30 को कल हम लोग लेक्चर लेंगे. ठीक है एवरीवन?